Dear students, today we are going to discuss should and ought to. So, if you go to your ninth class grammar book, what is written there? The modal auxiliary should is generally used to give advice or to express obligation. Ought to is almost similar to should in meaning and is used in its place. जदि आमे मोडल ऑक्सिलरी शुड को देखिबा ताले एटा कोथि पय यूज करूचे उपदेश दवा पय साधारणतः एडवाइस दवा पय बा मोरल ओब्लिगेशन को एक्सप्रेस करिबा पय नैतिक दायित्व जोटा अछि उत्तरदायित्व ताकू नैतिक कर्तव्य बा काहाकू उपदेश दउचे तो सेथि पय आमे काहाकू शुड को यूज करूचे ought to is almost similar to should in meaning, but ought to is a stronger expression and it used when there is moral obligation or when the obligation comes from outside. देखो suppose मु तुमको कहूची you ought to wash your hands, you should wash your hands, difference टा फाइंड करने चेष्टा करो. जेतेबेले मु कहूची you should wash your hands तो तम भितरे गोटे मोरल ओब्लिगेशन आसीबा दरकार तम तरफरु तमे हैंड वॉश करियो. You ought to wash your hands तो मोरल ओब्लिगेशन टा मो तरफरु स्पीकर तरफरु तम भितर को दिया जाउची. अंडरस्टैंड? तो when and normally when ought to it is a stronger obligation than should. बुझला? Only these things have been given, but if you come to different uses of should and ought to आमे देखिबा from other books. देख तो ought to टा आमे चारिटा केस रे यूज करि परिबा. प्रथम एक कथा हला मोरल ड्यूटी बा ऑब्लिगेशन जहां आमे हम 9th क्लास बही रे देखिले ग्रामर बही रे लिखा हिची मोरल ड्यूटी बा ऑब्लिगेशन. तो मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन टा हमें प्रेजेंट टेंस रे थिले भी ought to यूज हे परिबो. इफ इट इज इन द पास्ट टेंस आल्सो यू कैन यूज ought to, like you ought to obey your teachers, you ought to have worked hard. Compare these two sentences. You ought to obey your teachers तो इटा हला हमर प्रेजेंट टेंस रे. You ought to have worked hard तो this is past tense. Okay, you ought to have worked hard तमर कठिन परिश्रम करिवार थिला. बुझिला? आउ कोठी यूज करि परिबा एडवाइस सेंस रे भी ought to लागिवो. You ought to consult a good doctor, you ought to read a good newspaper. Then another use strong probability, he is very hardworking, he ought to win a scholarship. Okay, this is strong probability. मु तुमको कहूची he is very hardworking, he may win a scholarship. एते strong probability नहीं. He ought to win a scholarship. देखो यूज टा तमर हाई स्कूल ग्रामर भितर दउनी बा तमर 11th 12th क्लास ग्रामर भितर भी ought to रो ए यूज टा दउनी. बट दिस इज फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स एंड फॉर योर नॉलेज. जोटी स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी आसुची सेठी मध्ये हम ought to यूज करि परिबा. हला he is a very good racer, he ought to win the championship. You understand? जितेबेले मो ought to यूज करूची ता अर्थ मोर पूर्वरु गोटे रीजन अछि, पूर्वरु मो पाखरे गोटे सफिशिएंट रीजन अछि जोथि पई कि मो स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी केस रे नै परुची. ओके, सपोज मु कहिबी द फिल्म ऑफ संजय लीला भंसाली ought to be a great success. ता अर्थ संजय लीला भंसाली कर मूवी ought to be a great success. ता अर्थ ता पछरे रीजन अछि. ओके, सो these are the use of ought to. एबे हमें should रो किछि यूज डिस्कस करिबा. देख पिला माने जेमति कि मु कहितली तमे ought to जेमति यूज करूचो मोरल ओब्लिगेशन बा ड्यूटी सेंस रे सेमति भी should को यूज करि परिबा. जेमति कि we should respect our elders तो मोरल ओब्लिगेशन. we should help the poor गरीब लोक को हम सहाय्य करिया दरकार तो we should help the poor. to express advice or suggestion सेठी भी यूज हे परिबो केमति गवर्नमेंट should set off
new hospitals. Government should set up new hospitals. This is a suggestion. You should work hard to pass the annual examination. You should work. So it कौन दिया advice to express request. I should like to say that. I should like to say that here. Okay. तमे जेमती I would like to say that कहूला एठी जेमती I should like to say that भी कहि परियो जहार मीनिंग होची to express request. Then to make conditional sentence आमे conditional sentence रे भी should use करूछंती केमती use करूछंती आमे देखो should it rain we shall not go out तार अर्थ मीनिंग हला जदी वर्षा हुए ताला आमे जीवनी should it rain we shall not go out should you speak the truth I shall pardon you जदि तू सत कथा कही मु तते क्षमा कर देबी should you speak the truth I shall pardon you तो ए क्षेत्र रे भी should यूज होची आउ कोठी यूज होची should देखो to express supposition or improbable action गोटे improbable action तार जोटा असंभव काम बा गोटे supposition आमे मने करूचे let suppose सेठी हम यूज करबा should they work hard they will pass should they work hard they will pass होला तो these are the cases students where ought to आउ should यूज होईची तो मु तुमको एती कहबी इंग्लिश ग्रामर गोटे बहुत भास्ट एरिया ता भितर किछि की जिंस आमे डिस्कशन करूछंती यूज करूछंती इट इज नॉट दैट ought to आउ should रो सब तो यूज सरी गला वी कैन नॉट थिंक दैट वी कैन नॉट से दैट बट these are something I think which will be beneficial for high school students and also for my 11th and 12th class students. Thank you all.